हाँ जी, मैं हज़लील पमरा आज फिर वीरवार वाले दिन ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੋਲਿਸਟਰ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਟੋਨੀ ਬੰਗਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਲਾਮ ਅਦਾਬ ਜੰਬੋ ਐਂਡ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 0300770224 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, so where we left last week, can we carry on from that? Yes, of course. Okay. There was a number of questions which people have asked me about immigration law. After the screening, what exactly happens in the second interview? Okay, so the second interview in an asylum case is known as the substantive interview. Right. This is the main part of your asylum case. Okay. देखिए कोर्ट ने भी बहुत दफ़ा बोले हैं कि asylum case में इतने ज़्यादा सबूत की ज़रूरत नहीं होता, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जो अपने जान के लिए भाग रहा है उसको डॉक्यूमेंट संभालने का, डॉक्यूमेंट लेने का मौका कहाँ से मिलता मौका नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। और देखिए जिसका अपने मुल्क की सरकार से मुश्किल है उसको तो डॉक्यूमेंट और भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इट्स वेरी हाउ कैन यू गेट डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट योर ओन गवर्नमेंट, यू कैन नॉट। सो दैट्स व्हाई असाइलम की ये एक कोर एलिमेंट है आपका, ये सब्सटेंटिव इंटरव्यू जो मेन कुछ लोग बोलते हैं बड़ा इंटरव्यू। ये इंटरव्यू यूजुअली 4 to 5 आवर्स के लिए हो सकता है, कभी कभी 8 आवर्स जाते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में हमने ये भी देखे हैं कि एक दफ़ा इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने वापस बुलाया है क्योंकि उस इंटरव्यू से और भी ज़्यादा सवाल निकाल के आया जो वो क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं। ठीक है। इसको देखिए, अगर आप एक नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड इट्स अ बिट स्कैरी, आई एम गोना गेट क्वेश्चन चैलेंज्ड। बट आप दूसरी नज़र से देखिए कि दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी टू पुट माई केस फॉरवर्ड टू द होम ऑफिस, टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, एक्सप्लेन द सिचुएशन बैक एट होम। सो आपके पास अगर अच्छा गुड केस है, आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स है, यू कैन वेरी इजीली गो थ्रू दिस स्क्रीनिंग इंटरव्यू। ये स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ वो कुछ पार्ट्स में करते हैं। सो वो शुरू करेंगे आपको आपका क्या प्रॉब्लम है इन जनरल सवाल करके, फिर आपको उधर से सडनली ले जाएंगे कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फ्रेंड्स कौन है, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। फिर उधर से वो वापस आपको लाएंगे कि अच्छा आपने जो ये प्रॉब्लम हमें बताए हैं, आपने पुलिस से हेल्प लेने की कोशिश किए हैं, आपने इंडिया की कहीं और मूव करने की कोशिश की। सो दे डू यूज़ अ बिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स टू सी कि आपका क्लेम जो है ये सही है कि नहीं, क्या आप एक स्टोरी की तरह बना के बोल रहे हैं या फिर आपका जो जेन्युइन स्टोरी है आपको उधर से डिस्ट्रैक्ट भी किया जाए, आप वापस उस स्टोरी लाइन पे आ सकते हैं कि नहीं। सो अभी मैक्सिमम केसेस जो है उनमें फोकस इसी तरफ होता है, क्योंकि पहले वो असेस करेंगे क्रेडिबिलिटी मतलब कि क्या आप एक यकीन के लायक हैं कि नहीं। वो करेंगे प्लॉजिबिलिटी, मतलब कि आप जो बोल रहे हैं डज इट मेक सेंस और यू आर जस्ट टॉकिंग वियर्ड स्टफ, ठीक है। फिर वो करेंगे कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल है, कि हम मुल्क के बारे में जो जानते हैं और आप जो क्लेम कर रहे हैं क्या ये चीज़ें एक्चुअली उधर होता है कि नहीं। फिर वो चले जाएंगे सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन पे कि अच्छा लोगों के साथ तो होता है लेकिन आपके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, आपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों में। ये सारे असेसमेंट हो गया और अगर उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है एवरीथिंग हैज़ गॉन थ्रू प्रॉपर्ली, देन फाइनल असेसमेंट में वो जाएंगे कि इज़ देयर एन अल्टरनेटिव वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम यू हैव गॉट। वो इंटरनल रिलोकेशन के थ्रू भी हो सकता है, स्टेट प्रोटेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, ऐसे वो कंसिडर करते हैं। इमरान साहब, जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था यू आंसर इट वेरी वेल, एंड द सेकंड क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन टू नेक्स्ट वन आफ्टर दैट इज़ कि जब भी दूसरी इंटरव्यू हो जाती है तो उसके बाद कितने टाइम बाद वो डिसीज़न अपना देते हैं? जी, सेकंड इंटरव्यू के बाद ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरव्यू कैसे किया है, आपका स्टोरी लाइन क्या है। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि वो इतने दिन के अंदर ही दे देते हैं, बट यू कैन इमेजिन कि आपका केस जितना हल्का होगा डिसीजन उतना जल्दी आएगा। सो इफ इट इज़ ईजी फॉर देम टू रिफ्यूज़ दे विल वेरी प्रॉम्प्टली रिफ्यूज़ इट। व्हेन दे सी दैट नो देयर इज़ अ जेन्युइन सब्सटेंटिव क्लेम हियर, फिर वो उसको बहुत डिटेल से एनालिसिस करेंगे, उसके खिलाफ बहुत सारे सर्चेस करेंगे, ऑनलाइन रिसर्चेस करेंगे, करके देखेंगे कि वेदर इट ऑल टैलीज अप। बट स्टिल आवर एक्सपीरियंस इज विद इन as quickly as 2 weeks later also you can get,
as much as they can take around 2 months. It will be very rare कि वो 2 महीने से ज़्यादा ले रहे हैं. अगर 2 महीने से ज़्यादा हो गया मतलब जो आपने जवाबें दिए हैं उससे और भी सवाल पैदा होते हैं and they're looking to call you for a second substantive interview. But the usual experience is 2 to 2 months, 2 weeks to 2 months. Okay. इसके बाद जो अगर सपोज किया कि उन्होंने डिसीजन बना लिया कि they going to refuse you, what happens then? So देखिए, any refusal of human rights and protection claim is subject to a right of appeal under section 82 of the Immigration and Asylum Act. So section 82 के मतलब आपको एक अपील का हक होना चाहिए, unless वो section 94 के अंदर उसको सर्टिफाई कर देते हैं. एंड व्हाट इज सेक्शन 94 के एक बार जब फैसला कर लिया तब होम ऑफिस कंसीडर करेंगे कि देखें इज देयर एनी बेसिस एट ऑल. ये बहुत हाई थ्रेशोल्ड है और इस थ्रेशोल्ड को होम ऑफिस को ही सेटिस्फाई करना पड़ता है कोर्ट में कि दिस इज अ वेरी लाइक देयर इज नो चांस, ये केस को अपील देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ये अपील में कोई बंदा जो कानून का भी हालत है, जो इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं, देयर इज़ नो रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस. ठीक है. सो जब वो ये सर्टिफाई कर देते हैं तब आपको अपील का हक भी नहीं मिलता. वो बोलते कि आप अपील कर सकते हैं वापस जाने के लिए, लेकिन दैट इज़ नॉट इन ऑल केसेस. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको जब रिफ्यूज़ करेंगे आपको सेक्शन 82 के अंदर आपको राइट ऑफ अपील देंगे. राइट ऑफ अपील देंगे. अच्छा, एक दफ़ा फिर नंबर बता देते हैं. हाँ जी, साढ़े स्क्रीन ते अगर तुहाडे जहन दे विच भी कोई सवाल होए इमीग्रेशन बारे किसी भी तरह का ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ जो स्क्रीन ਤੇ नंबर आ रहा है 030077022246 ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ. ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 030077022246 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ. Imran Sahab, is there any, due to the change in the government, is there any rules which have changed? Or don't we know yet? Last week also we discussed some of the rules, some of the policies which have changed. The long residency criteria में उन्होंने जो 10 साल continuous residency होता है उधर उन्होंने कुछ differences लाए हैं in terms of what kind of breaks you can have, but there has not been any major change to the law structure altogether. Okay, Imran Sahab, there's a call coming. हाँ जी, वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ जी. ਤੁਸੀਂ कौन बोल रहे हो और कित्थों बोल रहे हो और अपना क्वेश्चन पूछो जी. हरविंदर सिंह बोलदा कमेंटरी तो मैं पुछना सीगा मेरी ना ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂ نو ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਲੈਸ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ what you call it British overseas citizenship ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ citizenship ਪਾਸ on ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ. ਪਰ 3 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ. that's my problem. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? Did you get the question? No, you can explain. हाँ, एक question है कि he has come in and he's got certain documents. He said something about being stateless. Did he say he yes, was stateless? Yes. So okay, that's what he's stating. Okay, जी, थोड़ा आंसर होना ये है. No, I didn't. So what was the main issue that he has submitted a national? आपने अभी nationality application डाले हैं? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. मैं ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ. ऑल्सो जड़ी मैं आप जानते हैं स्टेटलेस का मतलब है कि आपका कोई सेरेमनी मैं कर चुका हूं. स्टेटलेस का मतलब है कि आपका कोई पीछे सिटीजनशिप कभी भी नहीं था. नहीं. आप कहाँ पैदा हुए थे? केनिया में पैदा हुए थे जी. ओके यस. So yeah, this is actually a very long standing cases जहाँ पे lots of Indian immigrants, Pakistani immigrants, they went into Kenya, they were British overseas territory citizens. So Kenya ki, if he has not taken any nationality, the Nationality Act was amended, I don't remember exactly which year, but they have made a very clear provision that if you are a British
overseas citizen passport holder. Yes. If you make an application and you can show that you have not taken any other nationality since then, they will grant you British citizenship. There is some residency requirement to it, I think, but nothing else. So you should not be concerned at all. अगर आपने कोई दूसरे citizenship नहीं लिए हैं, अगर आपने Kenyan nationality नहीं लिए हैं और आप UK आए हैं वो British overseas territory passport लेकर, then your nationality application should be approved. 10 weeks is not a big time frame when it comes to Home Office. I don't know if you have received an approval letter, but once you get approval letter, you will then receive a ceremony letter. I don't believe there is anything to be concerned. If you have not received any update from the Home Office, आप Home Office की nationality policy में देख सकते हैं, वो बोलते हैं कि 6 महीने तक अगर आपको फैसला नहीं मिला, आप फिर भी हमारे साथ कांटेक्ट ना करें. ओनली इफ इट इज़ मोर देन 6 months आप हमारे साथ कांटेक्ट करें. और ये एक नेशनैलिटी इंक्वायरीज एक ईमेल एड्रेस है, आपको मिलेगा होम ऑफिस की वेबसाइट पे. उनका एक एक्सपीडिशन ईमेल एड्रेस भी है जहाँ पे अगर बहुत लेट हो गया है उधर भी आप ईमेल करके उनको पूछ सकते हैं. बट आई कैन टेल यू दिस मच दैट इफ इट हैज़ ओनली बीन 10 weeks द होम ऑफिस इज़ नॉट गोना रिप्लाई बैक टू यू. आपको मिनिमम 6 महीने वेट करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे बहुत सारे वेरिफिकेशंस करना पड़ता है. आपको समझना है कि होम ऑफिस आपकी जो पीछे जिधर से आप आए हैं उधर मुल्क में चेक करेंगे कि आपने उस मुल्क का नेशनैलिटी नहीं लिए है. अगर आप इंडियन ओरिजिन केनियन है, वो इंडियन अथॉरिटीज़ से आपकी डिटेल्स देकर चेक करेगा कि आपने इंडियन नेशनैलिटी नहीं लिया है. यू ओनली गेट ब्रिटिश नेशनैलिटी if you have never taken any other nationality as a British overseas citizens territory. So यहाँ पे क्या होता है कि they have got a lot of third party verification, और वो वेरिफिकेशन जब तक वापस नहीं आता they cannot make a decision. So अगर वो आपकी nationality is, you have to understand, big thing when it comes to the Home Office. Home Office is very careful when it comes to giving citizenship. So देखिए बहुत सेक्टर्स पे हैं वो क्रिमिनल चेक्स नहीं करते. Nationality, her application goes through a criminal check. If they have sent a criminal check to Kenya, if they have sent a criminal check to India, unless that response comes back, they will not give you a decision on the case. So the delay simply means that they have made verification request to third parties. जब तक वो third parties जवाब नहीं देता तब तक वो आपको फैसला नहीं देंगे. And in my professional experience, 10 weeks is not a delay. There is nothing to be concerned about if it has just been 10 weeks. 6 महीने के ऊपर चले जाते हैं कुछ केसेस, तब थोड़ा टेंशन होता है कि there must be something unusual. But anything below 6 weeks is a very standard home office processing time. Okay, I hope कि इस जो जवाब दिता इमरान साहब ने ਤੁਹਾਡੇ सैटिस्फैक्टरी जवाब होएगा. ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਈ ਕੁਇਕਲੀ ਸਾਈਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਟ ਇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹ UK ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, अगर उन्होंने हाले भी ब्रिटिश सिटीजन है तो यू कैन एप्लीकेशन तुसी कर सकते हो. पर वो जो करते हैं उदों बाद 3 4 5 6 महीने तक भी लग जाता टाइम. अगर 6 महीने तो बाद तो कोई जवाब नहीं आता तो तुसी उहदी इंक्वायरी करो. अगर ये घट तो मतलब कोई गलबात करने की लोड़ नहीं इहदे नाल. सो या that was, I think you probably are aware of a lot of Asians who were in Kenya, yes, Uganda, I have Tanzania. Actually at the beginning of my career dealt with a lot of those cases, but now we very rarely get those cases because most of those people have obtained settlement. ये उन्होंने जो policy निकाला था, it is a bit like a historical injustice kind of policy. You have seen the Windrush scandal that happened last time. So there is a lot of people who have served the British Crown or served the British overseas territory, and when those territories started becoming independent, they were neither British nor that country's national. And obviously the new country that was formed, liberating from the British Empire, they really looked down. So there was a lot of Indians who were being discriminated in Kenya because the Kenyan residents, they were like, well, you are not our citizens. You are not our citizens. You are racially not in line with us. You came here because of the British. Now that the British have gone, you should either go back or the British should take you with them. A bit that kind of an approach. And some of these people have gone through a lot of misery and hardship. But
as far as I know, most of these cases are now resolved. Most people have obtained their statuses in the UK or obtained statuses elsewhere in the world. Okay, I'll give the number again. ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 030077022246 ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਕਰਟ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 49 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕੋਡ B151TH और इन्हों का टेलीफोन नंबर है 079392664442। ये भी नोट कर लेना अगर तुम इन्होंने कॉन्टैक्ट करना हो बाद दे विच किसी वेले भी कर सकते हो, फोन कर सकते हो। तो इत्थे अगर तुम कोई क्वेश्चन करना हो तो जरूर 030077022246 से कॉल करो। Imran Sahab, does that happen, does the same thing apply to people who went back to India? They stayed there in India but still retained the British nationality. If they want to come back here after 30 years or something like that, they still have to make the same kind of application. No, so you see what happened was when different countries got liberated from the British Empire. Yes. At that time, they were the people, everybody, whether you were born and raised in UK or whether you were born and raised in a colony. Yes. You would have one standard passport known as the passport of the United Kingdom and colonies. They did That's not have right. two different Yes. categories. Yes. They only had one category, British citizen of United Kingdom and colonies. That was the category. Right. Okay. So from there they said, okay, that's fine. Whoever wants, once the colonies started getting independent, they started making a distinction that hang on, there will be a British citizen and there will be a British overseas citizen. Overseas citizen. And then they said, whoever wants to come into the UK now, come over, and if you stay in the UK for this much amount of time, you can convert to a British citizen. If you don't, then you will continue to remain as British overseas citizen. Right. So imagine the person went back to India, they never came to the UK. Yes. They will now remain as British overseas citizens living in India. Yes. Now, even those people, they have the British overseas passport, they can travel to the UK visa free. They don't need any visa. Okay. They can just buy a ticket, get on the flight, come into UK. The law then says that when they come into the UK, they are not allowed to work, they are not allowed to claim benefits, but they can stay up to 6 months as visitors. Okay. Yep. Once they are here in the UK, if they can then prove that, look, I am kind of a stateless person because India does not recognize me as a citizen. Yeah. Okay. Then they are entitled to apply for British nationality. However, you have to very crucially look at the national legislation. Yeah. Now, Excuse me. just because you have not taken an Indian passport, Yeah. just because you have not made an application to the Indian government and taken a document confirming your nationality, does not automatically mean you are not Indian citizen. Yeah. You have to understand, most of the original British overseas citizens have passed away. They are not alive. Yeah. Their children are the one who have inherited a British overseas territory passport, because when they were born, their parent had that as the only nationality. That's right. Yeah. Now these children, if they try to come over here and say, well, we never acquired Indian citizenship, Yeah. we have to look at what the Indian law says in relation to being born in India, between what period and what rights you acquire. Because for example, if you are in Bangladesh and you are born in Bangladesh, you will just be a Bangladeshi citizen. The operation of the law automatically gives you that nationality. Yes. Whether you claim it or not, passport is not the source of the right. Passport is an acknowledgement of the right. That distinction has to be understood. So there will be a lot of British citizens, forefathers English, born and raised in UK, but never ever took a British passport because they never thought of traveling. They never felt the need for traveling. So that's why you have to understand that just because you don't have an Indian passport does not mean you're not Indian citizen. So when you come to the UK and you apply for British citizenship based on the fact that your father was a British overseas territory citizen and you acquired British overseas from your father, the UK government will look into the Indian national legislation to say that, hang on a minute, when you were born, that time these laws meant that you were automatically a Indian citizen. Indian citizen. Because I'm not an expert on Indian national law, but you should
before you make this kind of application, or before you come to the UK with the intention of making this kind of application, you should take advice from your domestic lawyers as to what your nationality status is by the virtue of your birth in that country. Right. Okay, we've talked about Indians coming from Africa with British passport. Does that happen to any colony? Like sometimes there were some other colonies as well, Zambia. Yeah, of course, so does the same law applies to them as well? Yeah, the law does not specify any particular country. Law specifies certain principles. Okay. However, different countries took different approaches when the UK left. So, for example, if you are from Australia, which used to be a British colony at one point, that's right. Yes. Australian government has just randomly given nationality to everybody. So you cannot come from Australia with a British overseas territory passport. You would probably not even have that British overseas territory passport. When you applied for it, UK government rejected it, saying that no, now Australian legislation allows you to take a Australian passport. Go ahead and take it. So it all depends on how these colonies started treating the British overseas citizens once UK left their country. So the principles are same, applicable to everybody, but you have to look at your particular national legislation to understand whether you become eligible or not. Okay. Last week we touched on students switching to post-study work. Yes. There were some questions on that. People are very reluctant to come live on the show to ask questions. I did have some calls, and I said to them, you should come on there. And the question was asked, how long after post-graduation, post-study, can you stay here and work here? So the post-study work is a very time-limited visa. Okay. They're giving you 2 years time to stay and work in the UK. Okay. So by the end of that 2 year, either you need to make an alternative provision to extend your visa, or you need to leave the country. That's what the government expects out of you. Now there are different ways people extend that 2 years visa. How they extend that visa is that, remember, the operation of the law is this, that if you make any application while you have a visa, until this new application is decided, your status is the same as your last grant of visa. So imagine you have PSW, 2 days before your PSW visa expires, you make any application. While that application is under process, you are considered legal in UK. Now certain categories of application takes very long time for the Home Office to decide, and some people would know that ultimately I cannot get a visa out of this, but yet they go on to submit that application, because if it is something like a fundamental right, like a human rights, right? As a human being, anybody is entitled to make a human rights application. Home Office cannot turn around and say, oh well, XYZ can make and the others cannot make. Home Office can only say whether they will grant a visa on it or not grant a visa on it. They can say that whether refusing a visa is, like this application is unfounded or has some merit in it. But you see, what we term this as lawyers is that it is a qualified right. Human rights is a qualified right. That everybody, just as a human being, you qualify to claim this right. So the way lots of students go around is, once they come to an end, they have obviously done lots of education here. They have invested a lot of their parents' funds into their life over here, and in the PSW they have worked over here. During that work time, they have developed relationship with the community, with their customers, with the work colleagues. Putting all of those together, they put forward what is known as a private life claim. And that private life claim, yes, Home Office is not going to grant you, because they need you to be here 20 years, and they say that life created during temporary visa does not hold a lot of weight. But until the application is decided, you are legal and you can be considered, you can work and do everything. Imran sahab, ek call aa rahi hai. Hello, welcome, and आप कहाँ से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, और आपका सवाल क्या है? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, वेलकम। जी सर, मैं गुरविंदर बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं यूके बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी।
जी एक्चुअली ना मेरे नॉन में है, मेरे रिलेटिव ही है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनका क्या हुआ है, उनका असाइलम अभी उनको कार्ड वगैरह आया था असाइलम का, सो उन्होंने असाइलम की अपनी पिटीशन डाली थी, सो उनको असाइलम का कार्ड आया था, वो अपने सारे साइन वगैरह करने जाते रहे नॉर्मली। ठीक है। सो उनकी अभी सेकंड इंटरव्यू आई है, सो मेरे को उसके रिगार्डिंग आपकी सजेशन चाहिए थी। सो क्या प्रोसीजर होता है सेकंड इंटरव्यू के बाद, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सो वो प्रिपेयर है उसके अकॉर्डिंग। जी जी उन्होंने असाइलम केस किया था, उनको जो कार्ड मिला है इसको बोलते हैं ARC कार्ड, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड। वो देखने में एक वीज़े की तरह ही होता है, लेकिन वो एक्चुअली वीज़ा नहीं होता, वो सिर्फ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जिसके थ्रू बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जैसे GP रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कर सकते हैं। एनीवेज मूविंग टू द पॉइंट दैट यू वास्ट के उसका भी सेकंड इंटरव्यू के लिए लेटर आया है। देखिए नंबर 1 चीज़ तो उसको ये करना चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। किस तरीके का सवाल उसको किया जाएगा वो डिपेंड करता है उसकी एक्चुअल रीज़न क्या है असाइलम क्लेम करने के लिए। अगर आपने असाइलम क्लेम किए है ऑन द बेसिस के मुझे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, कि मुझे मोदी सरकार से डिफ़िकल्टी है, फिर उसकी क्वेश्चन आंसर्स अलग से होंगे। अगर आपने ये बोले कि मुझे कोई ऐसे गैंग के साथ प्रॉब्लम है, या फिर मैंने ऐसे कोई लोन शार्क से पैसे लिए थे जो अभी मेरे पीछे पड़ गए हैं, उनके लिए डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन होगा। सो विदाउट नोइंग व्हाट द एक्चुअल बेसिस ऑफ देयर असाइलम केस इज़, हम ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन आपको याद रखना है कि वो आपको हर तरीके से चैलेंज करेंगे उस केस के बारे में। चैलेंज करेंगे इन द सेंस कि अच्छा अगर आपको ये मुश्किल था, आप इतने आसानी से इंडिया छोड़ के इधर कैसे आए? अगर आपको ये मुश्किल था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ये इस तरीके का करेंगे। और जो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किए थे कि उनको प्रिपरेशन होना चाहिए, ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए लोग सोचता है कि मैं जिस गांव से आया हूँ उधर मेरा ये मुश्किल है, मैं तो उधर वापस नहीं जा सकता, मैं दूसरे जगह जाऊँगा तो मैं कैसे उधर रह सकता हूँ, क्या जॉब मैं कर सकता हूँ, कैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। Asylum is not about giving you a better quality of life or a convenient way of living. If you can escape your risk to life, that is good enough. So Home Office आपसे ये सवाल करेंगे कि ठीक है, अगर आप सोचे कि पंजाब से आए हैं तो आप अभी गुजरात जाके क्यों नहीं रह सकते, तमिलनाडु जाके क्यों नहीं रह सकते। जो इंसान बोल रहा है कि देखो मैं अपने जान के खतरे के लिए अपने मुल्क को छोड़ के एक फॉरेन कंट्री आ रहा हूँ, उस बंदे को तो यूके सरकार इजीली बोल सकता है कि आप मुल्क छोड़ के फॉरेन कंट्री क्यों, अपने मुल्क के कहीं और चले जाएं। और अगर आपके पास एबिलिटी है कि आप एक फॉरेन कंट्री में अपने आप के लिए जॉब लेकर हर चीज़ लेकर स्टैब्लिश कर सकते हैं, ज़रूर आप अपने मुल्क में भी कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट इंटरनल रिलोकेशन यू मस्ट प्रिपेयर वेरी वेल फॉर इट। ओके, एक देयर इज अनदर कॉल हियर। हाँ जी, तुसी कौन बोल रहे हो और कितों बोल रहे थे? अपना सवाल दसो जी। जी सर, मैं गुरविंदर बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको कॉल किया था ना, वो उसका सेकंड इंटरव्यू के रिगार्डिंग, सो मेरा फोन कट हो गया था नेटवर्क इशू के कारण। नो प्रॉब्लम जी। तो यही मैं बोल रहा था कि आपको फर्स्ट थिंग तो है कि ये इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली प्रिपरेशन करना, और इस प्रिपरेशन में 2 एलिमेंट आपको बहुत अच्छे तरह से मालूम होना पड़ेगा कि कैसे आंसर करना है, कि वाई कैन यू नॉट गो एंड लिव समवेयर एल्स इन इंडिया, दैट इज नोन एज इंटरनल रिलोकेशन। और सेकेंड बात है कि स्टेट प्रोटेक्शन, के यहाँ पे आप देखेंगे वो साइटेशन देता है होवार्ड टेस्ट। होवार्ड में हाउस ऑफ लॉर्ड ने बोला था कि इंग्लैंड में भी तो मर्डर होता है, इंग्लैंड में भी तो खून खराबी हर तरीके का चीज़ें होता है। इसका मतलब तो ये नहीं कि एक ब्रिटिश सिटीजन जाके बांग्लादेश में बोल सकता है मुझे असाइलम दे दो, isn't it? So as long as the country has an active police system, active judicial system, so you can seek protection from your country. No country can give 100% protection. So इसीलिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा इस तरीके के सवाल के लिए कि आपने क्यों अपने मुल्क से हेल्प नहीं मांगे। सो यूजुअली दिखाना पड़ता है कि जिन लोगों से आपका मुश्किल है, आइदर वो पॉलिटिकली लिंक्ड है या फिर उनके खुद के लोग हैं जो पुलिस में काम करते हैं। ठीक है, आपको कुछ तरीके से दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा कोई बात है जिसमें जनरल स्टेट प्रोटेक्शन जो होता है वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। और इस बारे में लैंडमार्क केस जो है अपर ट्राइब्यूनल का, वो केस का जजमेंट है AW सफिशिएंसी ऑफ प्रोटेक्शन, जहाँ पे एक कोर्ट ने बताया कि देखें जिस बंदे को पहले अटैक हो गया था, उसके ऊपर कोई शरीर में जख्म है, उसका ऑलरेडी पास्ट इंसिडेंट है, वो बोल सकता है कि हाँ जनरल प्रोटेक्शन देखो लास्ट टाइम मुझे फेल किया था, मतलब जो मेरे पीछे पड़े हैं वो
पुलिस के ऊपर है, वो इसको बाईपास करके भी अटैक कर सकता है। फिर उस सिचुएशन पे होम ऑफिस को दिखाना पड़ता है कि इस बंदे के लिए जो एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए, क्या ये मुल्क वो एडिशनल प्रोटेक्शन देगा कि नहीं। एनीवेज, एक बार आपका जब सब्सटेंटिव इंटरव्यू हो गया, आप मेक श्योर करें वापस आके होम ऑफिस से इंटरव्यू का ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगवाए, रिटर्न ट्रांसक्रिप्ट मंगवाए। ऑडियो और रिटर्न ट्रांसक्रिप्ट को, ऑडियो को सुन के रिटर्न को चेक करें। वी फेस थाउजेंड्स ऑफ केसेस जहाँ पे बंदे ने बोला कुछ, होम ऑफिस ने लिख दिया कुछ और, बंदे ने बोला कुछ, इंटरप्रेटर ने ट्रांसलेट कर दिया कुछ और। सो द बेस्ट टाइम, रिमेंबर, जब भी इंटरव्यू खत्म होगा वो आपको उधर बोलेंगे यू हैव 10 वर्किंग डेज इफ यू वांट टू मेक एनी रिटर्न सबमिशन और प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट्स, मेक श्योर यू डू दैट इन द 10 वर्किंग डेज। और इसके लिए आपको वो ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट ज़रूरत होगा। आप उसको प्रॉपरली स्टडी करके, कोई भी गलती भी आपने की है स्ट्रेट अवे आप आंसर करके उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। आपने गलती नहीं की है, होम ऑफिस ने कोई गलती किया है, आपके आंसर को रिकॉर्ड करने के लिए आपको उस वक्त बताना चाहिए। बहुत तो मतलब उसके बाद भी पिटीशन डाल सकते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है उधर। जी, वो आपको 10 वर्किंग डेज देगा। रिमेंबर, वी फेस अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे हम अपील में जाते हैं और जब अपील में दिखाया जाता है कि अच्छा आपने ये क्यों बोला इंटरव्यू में, बंदा उधर बोलता है ओ ये तो होम ऑफिस ने गलती किया, मैंने ऐसे नहीं बोला था। फिर कोर्ट बोलते हैं कि देखिए ये तो आपको बोलना चाहिए था इंटरव्यू के स्ट्रेट अवे। सो आप इंटरव्यू से वापस आके ही रिप्रेजेंटेशंस करें 10 दिन के अंदर, अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू इज नॉट अ जेन्युइन रिफ्लेक्शन ऑफ आपने क्या बताए थे। ओके जी, डन सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। क्विकली जो इमरान साहब ने दस्या और जो क्वेश्चन ਸੀਗਾ कि सैकंड इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਕਿਸ ਲਈ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਔਰ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ रिप्रजेंटेटिव है, लीगल रिप्रजेंटेटिव है, वो स्टडी करके अगर वो सही ना होण, तुसी क्या कुछ होवे लिखिया उन्होंने कुछ होवे जां तुसी क्या कुछ होवे इंटरप्रेटर ने कुछ और कुछ क्या लिखाता, उस बारे भी तुसी उन्होंने इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आ इदां सही नहीं गा। तो वो नाल काफ़ी फ़र्क पै जांदा। अगर तुसी रहन दिओ हो तो जदों तुसी अपील ते जाने तो उदों तुहानूं उस फिर वही क्वेश्चन करते हैं भी तुसी जदों उदों पहलां तुहानूं उन्होंने कीता सीगा इंटरव्यू कीता सीगा, गल्लां पुछियां सीगियां, स्क्रिप्ट और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो तुसी पढ़ के क्यों नहीं उन्होंने वापस इन्फॉर्मेशन दी कि आ गलत है। सो वो तुहाडे अगेंस्ट जा सकता। Am I right? It can go against you if you don't do. Main thing is they will not accept an explanation at the hearing that oh this was wrong. They expect जो भी wrong है आप वो गलती को straight away raise करें। आप wait ना करें कि कोर्ट में जाएगा 1 साल 2 साल बाद जब होगा तब मैं बताऊंगा कि इधर मैंने एक बोला था उन्होंने गलत लिखा है। So make sure you correct the mistakes immediately. Don't wait till the last moment. जे अगर तुहानूं लगे कि उहदे विच कोई गलती आ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਵ ਯੂ ਹੈਡ ਐਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਕੇਸਿਸ ਵੇਅਰ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਐਂਡ people have gone to appeal court? Yes, we have this a lot of time because unlike a lot of people, I do represent a lot of my own cases. Some people do choose to take barristers with them, but obviously if they don't, they want, I can go with them. Asylum cases are very fact sensitive. यहाँ पे कानून के इतने complications नहीं है, so it is not very hard to represent these cases. Main asylum case की वो interview बताए या court hearing बताए, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जो गवाही देने वाले हैं, आपके जो मुंह से बातें निकलने वाले, यही मेन केस होता है, यही मेन एविडेंस होता है। जैसे एक स्पाउस वीज़े के लिए आप रिलेशनशिप का फ़ोटोज़ ला सकते हैं, आप रिलेशनशिप के लिए चैट हिस्ट्री, मनी ट्रांसफ़र, बहुत कुछ ला सकते हैं। आप तो किसी को सबूत नहीं दिखा सकते कि फ्यूचर में कोई आपको मारने वाला है। नो वन कैन डॉक्यूमेंट व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। सो दैट्स व्हाई योर ओरल टेस्टिमोनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप जाके कोर्ट पे बोलेंगे ओ मैंने तो ये नहीं बताया था, मैंने कुछ और बताया था इंटरव्यू पे,
वो आपकी बातें नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अगर ऐसे होता, हर बंदा गलती करके इंटरव्यू में कोर्ट जाके बोल देता कि मैंने तो ऐसा नहीं, कुछ और बोल दिया था। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब ऐसे बोलेंगे आप कोर्ट को ये भी दिखा सके, ये देखे ये जो होम ऑफिस ने गलती किया था, आई एम नॉट कमिंग टुडे टू टेल यू, मेरे वकील ने या मैंने स्ट्रेट अवे लेटर भी लिखा था होम ऑफिस को पॉइंट आउट करके कि यहाँ पे गलती हुआ है, इसको सुधारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दैट वाज टू डू विद द असाइलम केसेस। अपने स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, पोस्ट स्टडी के बाद जो काम करते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे जब ये कॉल आई थी। तो अगर किसी ने एक कोर्स ख़त्म कर लिया है और 2 साल काम भी किया है, then if he wants to study further, yes, do some research on the same subject or do some course on a different subject, is he allowed to do that? Yes, of course. So after the PSW, you can switch back to being a student again. Okay. But remember that this time when he completes his education, yes, he cannot get PSW again. PSW is granted only one time. Only once. Yes. But he can go back to being student. So imagine you came here to do a 3 years undergrad degree. Yeah. You finished your undergrad. You can go back, go into PSW, complete 2 years PSW. 6 months before your PSW completes, you can take admission for masters. Okay. And once your PSW is about to end, you can apply for a master's visa and you can then switch for 1.5 years into masters. Just 2 things you have to remember. Number one is the next new course that you are going, they must amount to what is known as academic progress. Okay. कि ये नहीं कि होम ऑफिस को लगता है अच्छा ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट बन के घुमा रहा है सिस्टम को, ही इज मेकिंग। सो आप एक दूसरे डिग्री पे भी चले जाए। सो इमेजिन यू डिड एन अकाउंटिंग डिग्री 3 years, now you have got PSW 2 years and now you want to go back to do another 3 years finance degree. So because it is in the same line of education and these are 2 complementary courses which is enhancing your career ability, that can also, even though both are degree level, it can still constitute an academic progress. So you need to make sure, number one, that you are having academic progress. Second thing is you must remember that there is cap on how long you can stay in the UK as a student. So you need to see what was your first period of stay and this new caste letter start and end date, the period they have put, whether that adds up to be a period more than what is allowed at your level of study. So जैसे कि आप undergrad level पे maximum 5 years रह सकते हैं. You cannot stay more than 5 years as an undergrad student. You cannot stay more than 7 years as a postgrad student. You cannot stay more than 8 years or 9 years as a PhD student. So I don't know the exact number of years, but just check before you apply. And remember that no solicitor, and I will say this working in a solicitor's firm, that no solicitor knows student rules better than your student international student department at your university. They get direct guidance from the Home Office in order to maintain their sponsor license as a student sponsor, international student sponsor. They go through hundreds of pages of documents to learn what are the rules, what are the restrictions. So when you go to your international department and you show, just be transparent and honest with them. This is the number of years I have stayed already as a student. This is what I have been as PSW. This new course is this many years long. Can I actually get a visa? Your international students team, the department, they will calculate and tell you for free and with perfection whether this particular course will lead to a grant of visa for you. क्योंकि देखिए उनके ऊपर भी ये responsibilities होता है कि वो भी किसी को ऐसे कैश लेटर ना दे जिसका स्टूडेंट रिफ्यूजल हो जाए. ठीक है ना, उनकी भी कैश लेटर्स लिमिटेड होते हैं. When they want to give a cash letter, they want to make the full tuition fee money from you. They don't want to get refused and lose that cash letter. So they will make sure that they're giving you a course which allows you within that cap limit of student visa. Okay, the same thing actually was something has come into my mind, and I've actually seen a lot of these students. The girls, they do whatever needs to be doing and they get a visa to come here on study basis. Yes. And sometimes they bring their spouses over. Yes, they could before, now they have stopped it. They can't bring any more. They can't bring any more, so that's stopped. Yes, that's stopped now. So they can only bring if it is at a research level. And then a lot of people says, oh, masters is research, isn't it? Because sometimes some universities are think that they kind of show that the master's dissertation is like a research, but no, that's just a research module. Research means either MPhil or PhD.
So only in MPhil and PhD you can bring dependents. You cannot bring people who are already here. They can extend their visas, not a problem. But new entrants cannot bring dependents if they are coming as a student. So supposingly a couple got married in and they got a visa and they're coming here for research and they want to bring their spouse over, husband or wife, whichever way. Are they allowed to work full time? The spouse is allowed to work full time, yes. Okay. So the student, previous lead applicant, they will be allowed to work 20 hours during term time, full time during holiday time, and the spouse who comes over, they are allowed to work full time throughout. Okay. Imran Sahab, there's something which has always baffled me. What happens when they've done their research, now according to new laws, and the student who's doing the research has got to go back? Has the spouse got to go back at the same time? Yes. So the spouse's visa is completely dependent on the student. So only exception they have made, which wasn't there before, and they have made that exception just this year in April, is the spouse, if they can show that they are being victimized, as in they are a victim of domestic violence, then they can apply to get a 3-month visa. Once they get that 3-month visa, they can then apply to become a student themselves or become a work permit holder, whatever, they can apply to switch. But that was just introduced this year. So before that, if your lead applicant leaves or you are separated from the lead applicant, then your visa is automatically cancelled and you have to leave the country as well. So if they had a separation or while the one person is doing research, the dependent has got to go back. Dependents have to go back. So, unless the separation happened because of domestic violence. That's the only exception. Okay. What about the children? I mean, I've seen a number of students who have come here, they've been studying, doing masters or some sort of a degree, and they've actually pregnant and they've had children. Are they allowed to have time of 2 years or a year to bring them up, or? Unfortunately, no. So even what the Home Office will expect is that if you had a child now and that is disrupting your education, you go back to your country, you spend some time once the child is raised up, and then you can get a new application to get new sponsorship to come back. Yes, of course, maternity leaves are granted. University can authorize certain amount of maternity leave, but that is about it. It cannot become the case that you have come here to do, let's say, 2 years master's degree. Within 6 months of arrival, you have had a baby, and now you're saying that, okay, for the next 1 year, I'm not going to attend university, and then I'm going to take a visa extension because I couldn't finish my course within the given time. So you have a criteria of attending your university. If your attendance falls below what is required by the Home Office, the university is bound to report you to the Home Office, and then the Home Office will curtail your visa. And pregnancy, childbirth, the aftermath of childbirth, the difficulties of raising children are not considered as exceptional circumstances for which you should nonetheless be allowed to stay, because Home Office views it like this, that you are a temporary migrant who has come to the UK for a specific purpose. That's right. A lot of people think that, once I go there as a student, I will make some other way. Well, that's your thought. Home Office have not asked you to think like that. Some people think, once I go there, maybe I can do this or I can do that and I can stay on forever. But remember that this is the arguments that were considered in legitimate expectation. That does a government granting somebody a student visa or a work permit lead to them having a legitimate expectation to stay on? And the courts have repeatedly said that no, the only expectation you can have is as long as you have been granted for a purpose. As long as you stick to that purpose, you are fulfilling the purpose, you can stay here. If you are not, you have to leave the country. So it may sound a bit harsh, but if you think of it from their Home Office's point of view, they believe that no, if you're a student and not studying, you should go back. Whatever the problems are, you can resolve that and always come back to resume your study. Why stay here while dealing with those problems? Okay. Yeah, we've actually talked quite a lot about the students. So अगर किसी दे ज़हन दे विच कोई question होवे तां जरूर हाले भी साडे कोल 5 मिनट हैगे हैं
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300770224 ਤੇ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਰਟ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ 49 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕੋਰਟ B151TH और इन्हों का टैलीफोन नंबर है 079392664442। इस टैलीफोन पर तुम इन्होंने गलबात कर भी सकते हो, अपॉइंटमेंट भी बनवा सकते हो और अगर कोई थोड़े जहन के कोई क्वेश्चन हो वो भी इन्होंने पूछ सकते हो। तो चलो कुछ मिनट हो रहे हैं ये और कोई गलबात करते हैं तो जरूर ख्याल रखना कि अगले हफ्ते लिए कोई ना कोई अपना क्वेश्चन होवे तुहाडे ख्याल च होवे तो जिन्नी छेती होवे लाइन ते तुसी लगो और क्वेश्चन अपना पुट अप करो ताकि तुहानूं उहदा जवाब मिल सके। इदां गल करनी चाहिए है कि पहलां अपना क्वेश्चन करके तुसी अपना फोन रख दिओ तो जदों जिहड़ा ये आंसर करदे आ वो सुनो टैलीविजन ते और बैटर स्टिल अगर हो सके तो अपने जो प्रोग्राम रिकॉर्ड ते ला लिया करो ताकि तुसी उन्होंने मुड़ के रिवाइंड करके भी सुन सकते हो। यू हर्ड व्हाट आई सेड, दे कैन रिकॉर्ड इट एंड राइट। Any other message you'd like to give to them within the 4 minutes rather than starting something else now? No. Yeah. See, very heartbreaking and very, how can I say it, concerning things that we see in the immigration practice is people being regularly defrauded in the name of work permit. Yes. Do not trust people and depart with 20,000, 25,000. Today also I had this lady in front of me who has paid 25,000 pound to these people. She had a valid visa, valid PSW that was about to expire in January. When it was about to expire, there is this agent kind of guy who pretends to be an agent. And I find it quite astonishing that when I'm asking, okay, give me this person's home address, company's name, they don't know anything. So, oh, हमारे जानने वाले इस बंदे को उसने 2 वीज़ा लगवा के दिया था, that's why. Yes, there was a time in 2022, half of 2023, Home Office granted work permit, sponsorship license to anybody and everybody. Anybody and everybody got a COS and applied. Those days are over. If someone got a visa for somebody else, that doesn't mean they can get you a visa now. Don't give people thousands and thousands of pounds thinking they will arrange a work permit for you. Meet the company, talk to the company owners, see what the system is. Make sure when the applications are made, you use your own email address for submitting that application. This person made that application in January. Now she had a baby last month and NHS has sent her a huge bill saying that you are illegally living here and you have to pay your NHS cost. And they're saying that no, I have been waiting for the outcome of my application. They even called that agent and the agent is even yesterday they called the agent and the agent is like, no, your application is still pending. We haven't received anything. However, we are now going to withdraw this application because it has been too long. That didn't sound right to me. When I made enquiries, I got to know that the application was rejected back in March. And because he has taken 25,000 pounds, he doesn't want to give the money back. He doesn't want to give the money probably back. He can easily switch off his phone now, disappear, because end of the day, these are not traceable money. But he probably wants to make more money out of people for which he is staying in the limelight and selling this false hope that no, this will happen and that will happen. And I was astonished. The people who came to me, they said that it's not us. There are 38 people I know who are waiting for a decision since January. So think of the volume of fraud this person has done. If he has taken 10,000 pounds from each, let's say 38 people, 25,000, let's say he has given some money to the company who issued the sponsor license, some money in the Home Office application fees. If he has made 10,000 pounds each, that's 380,000 pounds he has made fraudulently. Exactly. And the British government is not doing anything about it. The OISC, the SRA, nobody is doing anything. This is just a work permit scam that is going on in this country, and it is, I cannot describe it as anything other than scam. And it is so heartbreaking. They are extremely people from difficult backgrounds. They are selling everything they have in their home country to bring the money and pay for this with the hope that okay, we will get the visa in 5 year time, we will get settled. Oh, our visa is coming to an end. We have no way of extending it.
And I don't understand the morality of these people who are just taking this money. Yeah. We have had lots of nightmare stories. There was one lady who was actually arrested by the OIC because she went to the extent of just making fake work permit letters and giving people for 10,000, 15,000 pounds. Okay. This guy at least took work permit from some company and sold it to people, and now that company either got their sponsor license, because we don't know, he has just been lying that your application is pending, and we have just figured out within few hours today that no, the application was rejected back in March. But just be very careful. Don't depart your money to these strangers who claim to arrange a work permit for you just because they arranged for somebody you know. It doesn't work like that anymore. The possibility of you being defrauded is too high, and tracing them to get the money back is next to impossible. Yes, chalo sada program ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, would you give them your company's name and address? So I work at Lawrence Kurt Solicitors. We are in Edgbaston, 49 Quadrant Court, B151TH. So if you Google search Lawrence Kurt Solicitors, you will be able to find our